Good morning, students. Next to see the sign and a symptom of stress overload. So, we said that some cognitive symptoms are there. Cognitive system, physical symptom, emotional symptom, behavioral symptom. So, in the cognitive system, there are persons have the memory problem. You forgotten after remembering of the some lessons. If your friends asked you to bring a cake, but due to stress you forgotten, okay, and do not bring the cake, तो तुम सांग जो कहला गोटे केक आने तुम जेहेतु स्ट्रेस कौन रही बेले बेले भूली जाता तो मेमोरी प्रोब्लेम ये रहा and you have the incapability to concentrate to the study the lessons in the classroom बेले बेले कौन हुए स्ट्रेस जो तुम किसी लेसन कनसेंट्रेट करिकी मन रखिपारि न था and you have the poor decisions due to the divert of your concentrations due to stress, so you decide poor decision take, then that decisions will hamper to others, and always you should to the others negative. You cannot think about yourself but things to others, and thinks the bad ideas, thinks the bad talking, and say the bad talking to others through by the negative thing बेले बेले अन्य मानक नेगेटिव देखिकी खराब चिंताधारा करिथाए एवं खराब कथा मते कहिथाउ persons sometimes becomes anxious, okay, and becomes very worry due to the task is not completed. The task is complete nala तुम anxious worry hi जाइथाउ. Then in the physical symptom, patients feel pain, having the patients due to the stress condition, they incapability to take the proper foods, and so that causes the diarrhea. Person sometimes becomes a dizziness due to the very chest condition. Persons feel the chest pain, and sex type loss of the sexual interactions, and persons sometimes becomes very cold. In the emotional symptoms, person's mind will be changed. Person sometimes becomes anger, then he becomes very happy, then he will be very crying situations. Persons becomes very short temper. If you ask to something, then suddenly he becomes angry, and the whatever feels that will be very bad, and that feels is out of imagined line, and persons always feel loneliness, and persons go to depression stage. In the behavioral symptoms, person sometimes eating very much amount of foods, sometimes take very less amount of food, and the sleeping pattern also be hampered, and sleep there is a persons awake in the night, and that is no insomnia condition, that known as insomnia. व्यक्ति कौन है राति रे चेंक रहे सोई पारे नहीं, okay, and persons always happy or very comfort by isolations from others. अन्य isolation है कि एकत्र रहे से बहुत चेष्टा करे. Then persons also do the nail biting, etc. Other health problem like the persons, if the chronic condition, that stress will be if the stress remains chronic, that persons feels pain. Persons has a very type of heart disease like the atherosclerosis, coronary heart disease, etc. There is a disturbance in the sleeping. Persons goes to the depression condition, and autoimmune disease also be appear due to the chronic inflammation of the tissues in the or systemic and organ, okay. आमर ऑर्गन वा कौन सिस्टम रे कौन हुए ऑर्गन सिस्टम रे टिश्यू रे कौन हुए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो एवं टिश्यू रे इन्फ्लेमेशन बहुत दिन रही जो ऑटोइम्यून डिजीज सब क्रिएट होता है, and skin altered in the skin condition, that is eczema will be appear. Total body form कुंडे हुए तो eczema condition create मध्य हो जाए. Then come to the stress adoption. For the stress, to reduce stress, coping mechanism will be adaptable at that situation. So coping strategy हमें सेठी apply करी थाउ. Here in the coping strategy method, person adjust to the situation. एथर व्यक्ति को सिचुएशन को कोपिंग स्ट्रेटजी मेथड द्वारा व्यक्ति कौन करे सिचुएशन सहित एडजस्ट करि थाए, ओके, ताको हमें कहि थाउ स्ट्रेस एडप्शन. सो स्ट्रेस एडप्शन इज द मेथड इन व्हिच कोपिंग स्ट्रेटजी विल बी अप्लाइड टू रिड्यूस द स्ट्रेस और मेंटेन द स्ट्रेस कंडीशंस.
So in the coping the person adjust to situation तो stress adaptation condition रे व्यक्ति कौन करे coping strategy apply करिकी situation सहित adjust करी थाए coping होची गोटे मेथड जो थरे व्यक्ति situation सहित adjust करी थाए एवं by which your health condition will be promoted coping strategy in the coping strategy person adjust to the situation if the environmental condition will be changed or unchanged or there has the any type of problem जेकोसी प्रोब्लेम होता है एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज एनवायरमेंटल चेंज हो कि न हो व्यक्ति करे सिचुएशन बा एनवायरमेंटल अनकम्फर्टेबल एनवायरमेंट सहित एडजस्ट करके रही है देयर इज टू टाइप्स ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजी गोटे फर्स्ट द प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग देन सेकंड द इमोशन फोकस्ड कोपिंग इन द प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग here persons making change herself or himself and taking some remedial action and adjust with the situations व्यक्ति एथरे कौन करे निजक निजे चेंज करि थाए एवं किछि एक्शन नै कौन प्रोब्लेम सॉल्व करता है एग्जांपल हॉस्टल रे तले व्यक्ति रही थाए तो से पाठ पढ़िया असुविधा हुए कारण राति से जेहेतु से राति तार अभ्यस्त अच्छे पाठ पढ़िया तो से बल मान लाइट पाठ पढ़ी थाए तो जेहेतु बल लाइट रे कौन हुए ना शोबार हांपर हुए तो व्यक्ति कौन निजक एडजस्ट करे बल जलू था कि न जलू बल जली अवस्था से शोई थाए और पाठ मत पढ़ी थाए यहाँ हूँ कमन गोटे प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग देन इमोशनल फोकस्ड थ्रू बाय द इमोशनल फोकस्ड कोपिंग थ्रू बाय द थिंकिंग वी रिमूव आवर बैड आइडियाज और एक्शन देन इमोशनल डिस्ट्रेस विल बी रिलीव्ड इमोशनल फोकस्ड कोपिंग रे कौन हुए जहाँ आम बैड आइडिया बा थॉट रही आम हटे आम कौन कर करेक्ट डिसीजन प्रोसेस रे आम इमोशनल डिस्ट्रेस को रिड्यूस कर तो कोपिंग स्ट्रेटजी ऑल्सो भी डिवाइडेड इनटू लॉन्ग टर्म कोपिंग शॉर्ट टर्म कोपिंग इन द लॉन्ग टर्म कोपिंग इज वेरी रियलिस्टिक एंड इज वेरी ट्रूथफुल for that finding the solution of the problem we talking with others and find out the solutions and in the long term coping also we change our lifestyles like the take the healthy habit do the exercise daily and making problem solving decision okay and instead of the anger तो लॉन्ग टर्म कोपिंग कौन हुए ना आम आम लॉन्ग टर्म कोपिंग हूँ गोटे रियलिस्टिक यहाँ ट्रूथफुल ओके इट इज वेरी कन्स्ट्रक्टिव आम अन्य मान सहित कथा हुई कौन हुए आम प्रोब्लेम को सॉल्व करने ट्राए करूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रे आम लाइफ स्टाइल को चेंज कर सब एक्सरसाइज करवा बैलेंस डाइट खाइबा एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग ठीक समय डिसीजन नहीं था रागिया परिवर्ते हम सठिक समय डिसीजन नहीं था ये लॉन्ग टर्म कोपिंग उदाहरण then come to the short term coping in the short term coping it is the temporarily okay it is परमानेंटली डील विथ रियलिटी रियल सहित ये डील करता है किंतु ये टेम्पोरारी अटे टेम्पोरारी समय आम स्ट्रेस को रिड्यूस करें थ्रू बाय द यूजिंग अल्कोहल डे ड्रीमिंग किसी समय अल्कोहल नहीं था डे ड्रीमिंग द्वारा कौन हुए ना शॉर्ट टर्म कोपिंग स्ट्रैटेजी को मेंटेन करता है रिड्यूस को स्ट्रेस को रिड्यूस कराई था and so coping can be adaptive and maladaptive in the adaptive coping we apply our cognitive thinking cognitive and behavioral effect like the cognitive effect like the thinking judgment decisions and through by the behavioral effect we manage our stressful condition तो adaptive coping रे our cognitive power को लगे थाउ cognitive power होची thinking judgment decision एतिका अप्लाई करि थाउ behavioral मध्य बिहेवियर निजर बिहेवियर को अप्लाई करके आम स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज करिए थाए in a maladaptive situations maladaptive coping that is increased stress by negative behavior such as getting drunk or harming yourself so maladaptive coping रे कौन है ना स्ट्रेस कंडीशन बढ़ी थाए कहीं ना आम जो नेगेटिव बिहेवियर शो करें जथा ड्रिंक करके गाड़ी चलाई था ताहले यह आमको अन्य मानक क्षति पहुँची थाए तो ये maladaptive coping एग्जांपल then come to the assessment so nursing assessment is necessary for reduce the client's stress
So first is the quality history, like the present and past coping strategy. से present और past कौन coping mechanism apply करूला, what type of stressors also भी cause stress, that will be collected. Then do the physical examination, like so in the physical examination nurse determine what are the indicators for the stress, like the nail biting, nervousness, weight changes. যে ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନେଲ୍ ନଖ କାମୁଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ନର୍ଭସ୍ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ୱେଟ୍ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, ଏହାର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍, ତାକୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଥା ହାଇପରଟେନସନ୍ କି ଡିସ୍ନିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଇଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ବ୍ରିଦିଂ କି ତାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ତା'ର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ହାଇପରଟେନସନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ ଫିଜିକାଲାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିର ନଖ କାମୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା ତା'ର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଥା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତା କିମ୍ବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ବ୍ରିଦିଂ ହୋଇଥାଏ ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଲା, ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉଛି ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଓକେ, ତ ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଛି, ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି। ଓକେ, ଯଦି ତା'ର ରୋଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ରୋଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଏଇଟା ସେ ଗୋଲ୍ ଯାଉଛି ହେଲା, ବା ଗୋଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଏକା ରହୁଛି। ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କଲା ଫଙ୍କସନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉଛେ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିକି କ'ଣ କରୁଛେ, ତା'ର ଯଦି ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏନକରେଜିଂ ଦ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରମୋସନ୍ସ। ସୋ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର କରୁଛି ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦରକାର କରୁଛି, ତା'ର ଠିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନେଉଛି, ଆଡୁକେଟ୍ ରେଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ନେଉଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଲି କରିବାକୁ କୁହାହେଉଛି, ଏନକରେଜ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ରହିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସପୋର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନର୍ସିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା, ଫିଜିକ୍ସ କରାଗଲା। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗଲା ଇଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ anxiety conditions related to the hospitalization of the patient as evidenced by the nervousness, weight loss। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଇଛି, ତ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇକି ତାକୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଲାଠୁ ତାକୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଇଛି ତା'ର କେମିତି ଜାଣୁଛି ତା'ର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଲା ବୋଲି ନା, ଆଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ବାଇ ଦ ନର୍ଭସନେସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ରହୁଛି, ତା'ର ନର୍ଭସନେସ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, we give the physical exercise, optimal nutrition, encourage health promotion, rest sleep, nutrition, etc. ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଇଡ଼େଡ଼ ଇମେଜିନ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭିଜୁଆଲ୍, ଅଡ଼ିଟୋରୀ, ଅଲଫାଟୋରୀ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, ଅଡ଼ିଟୋରୀ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା, ଅଡ଼ିଟୋରୀ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା, ତଥା ଓସେନ୍ ସମୁଦ୍ରର ୱେଭ୍ ଶୁଣିବା, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଡ଼ିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେମୋଥେରାପି ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳାଇଥାଏ। ଦେନ୍ କମ୍ ଦ ବାୟୋ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। The biofeedback, it is a mind body technique that involves using visual or auditory feedback to gain control over the involuntary body's function such as blood flow, blood pressure, heart rate। तो बायोफीडबैक मेकानिजम हूँ गोटे बॉडी माइंड बॉडी टेक्निक जो थे कि बहुत उभय विजुअल ऑडिटरी फीडबैक
रही थाए। ये विजुअल ऑडिटरी फीडबैक रे कौन हुए ना व्यक्तिर इन्वोल्युंटरी बॉडी जो इन्वोल्युंटरी फंक्शन रोचे जोटा सो इच्छा जो बॉडी फंक्शन जो फंक्शन गुड़ाक सो इच्छा चली न थाए से इन्वोल्युंटरी चली थाए व्यक्तिर अनिच्छा सत्वे से चली थाए यथा ब्लड फ्लो होता है ब्लड प्रेशर होता है हार्ट रेट भी चलता है यहाँ इन्वोल्युंटरी बॉडी फंक्शन है। ताले बाय फीडबैक हूँ मेकानिज्म जो थे कि माइंड बॉडी टेक्निक रही जो थे कि विजुअल ऑडिटरी फीडबैक द्वारा व्यक्ति कौन करे व्यक्तिर इन्वोल्युंटरी फंक्शन यथा ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट कंट्रोल होता है। ओके तो ये बाय फीडबैक मेकानिज्म कौन हुए व्यक्तिर इन्वोल्युंटरी बॉडी फंक्शन यथा ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट कंट्रोल होता है यह गोटे विजुअली ऑडिटरी फीडबैक। ओके सो आउ थे कही बाय फीडबैक इट इज ए बॉडी माइंड टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक टू कंट्रोल द इन्वोल्युंटरी बॉडीज फंक्शन सच एज ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट। बाय फीडबैक हूँ गोटे बॉडी माइंड टेक्निक जो थे आमर बॉडी इन्वोल्युंटरी फंक्शन यथा हार्ट रेट ब्लड प्रेशर एवं ब्लड फ्लो को कंट्रोल करि थाए। एग्जाम्पल व्हेन पर्सन हैज लर्निंग ईटिंग डिसऑर्डर here biofeedback may be used to treat numerous physical and mental health issues including asthma incontinence जो व्यक्ति अधिक खाऊँ कि पढ़ार किसी प्रोब्लेम हो तो बायोफीडबैक मेकानिज्म द्वारा कौन हुए ना बॉडी माइंड बॉडी टेक्निक द्वारा आमर फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यू सब रोचे यथा व्यक्ति के आस्थमा हो इनकंटिनेंस व्यक्ति इनकंटिनेंस रही। ओके देन कम टू थेरापेटिक टच। A process by which energy will transferred to the illness patient that causes the promotion of a health। ओके जो व्यक्ति इंजुरी रोचे इलनेस रोचे कि आउटसाइड एनर्जी ताको जदि आम ट्रांसफर कले ताहले व्यक्ति कंफर्टेबल स्टेज रोचे। एग्जांपल इफ यू गिवन म्यूजिक थेरापी टू द इलनेस पेशेंट देन थ्रू बाय द इट इज वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और द इट इज प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट एंड ह्यूमर एंड लाफ्टर यू प्रोवाइड इफ यू प्रोवाइड ह्यूमर एंड लाफ्टर जदि व्यक्ति पाखे भल कथा कहवा कि सहानुभूति देखा ताहले व्यक्तिर किसी परिमाण में कौन हुए डिजीज क्योर हो जाए। इन द एवल्यूशन स्टेज रे नर्स कलेक्ट डाटा दैट इज द पेशेंट इज इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन और नॉट आफ्टर गिविंग सम रिमेडियल एक्शन गिविंग सम हेल्दी डाइट एक्सरसाइज म्यूजिक थेरापी एक्सेट्रा। तो आमको व्यक्तिर लास्ट को देखा व्यक्ति स्ट्रेसफुल रही कि ना आम सब इम्प्लीमेंट स्टेज रे सब देलापर हेल्दी डाइट देले एक्सरसाइज देले आउ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देले सब देलापर तार कौन सब कंडीशन रे किसी इंप्रूव हो कि ना व्यक्तिर फिजिकली साइकोलॉजिकल कंडीशन इंप्रूव नहीं देखा। ऑब्जर्वेशन पेशेंट फॉर एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ फियर एंजाइटी तार फियर एंजाइटी रिड्यूस होला कि ना एवं तार ब्लड प्रेशर हार्ट रेट रे किसी परिवर्तन है कि ना एवं से व्यक्ति फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट अच्छी कि ना ये सब जाना तो ये स्टेज ओवर। ओके सो स्ट्रेस एंड कोपिंग जो स्ट्रेस एंड अडॉप्शन इज ओवर। ओके देन विल डिस्कस अबाउट द सेल्फ कॉन्सेप्ट द नेक्स्ट क्लासेस।